I was telling somebody, मतलब आज ही मेरी सुबह किसी से बात हो रही थी, मैंने कहा हमारी जो 40 लाख करोड़ की जो इंडस्ट्री है ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ कि ये 100 लाख करोड़ की होगी अगले 5 साल में, हो जाएगी। एंड इट इज जो अपनी डेमोग्राफिक्स है, आपने सही बोला, TRs, और आई नो अपना ये टॉपिक नहीं है, बट आई वाज जस्ट कहते हैं ना कभी बह जाते हैं अपनी जो आपके उस पे, बट जो डेमोग्राफिक्स है, वी आर लकी टू बी इन इंडिया, वेयर यहाँ पे अभी वी आर द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, वी हैव सो मेनी अपॉर्चुनिटीज विच आर देयर, एंड देयर विल बी सम हर्डल्स जो हुआ है पिछले 1.5 साल में. Markets have been flat. People have not really necessarily made money. Investors have not made money. But these are the times जो सीट बेल्ट पहन के फिर यहाँ वापस अपने रोलर कोस्टर में तैयार हो जाना चाहिए. कोई और तरीका नहीं है. और कई बार हमें ऐसा लगता है प्रतीक, डालमिया वेल्थ में या मास्टर स्ट्रोक में, कि 2 दिन के लिए अगर कुछ करने को नहीं होता ना, तो लगता है करें क्या आप जिंदगी में, कुछ करना है, खुजली होने लगती है. कोई रिस्क आता है तो लगता है इसको हैंडल करना है, और उसी में आनंद आता है. और जब वो रिस्क आप हैंडल कर लेते हैं तो लगता है कि चलो सब अच्छा हो गया. एंड देन यू कंपाउंड. द कंपाउंडिंग हैपेंस बाय मैनेजिंग योर रिस्क. फॉर एग्जांपल, पैसा लगाया म्यूचुअल फंड में, नीचे गिर गया, नाउ यू आर इन्वेस्टिंग मोर थ्रू SIP. So that risk that you are taking again to invest when the markets are down, you are taking more risk. And because you are taking more risk in SIP and one-time investment, by staying in the market, you और गिर सकता है. But वैसा नहीं होता, और आगे जाकर के उसको कंपाउंडिंग का रिजल्ट आता है. So that's the whole thing, yeah. Thanks, Sanjay ji. Thank you very much for your blessings. As at WhiteOak, in fact, our founder is a classic example of this. When Prashant Khemka quit his job, he was the CIO of Goldman Sachs for India and emerging markets, making a multi-million dollar. At that level, he was actually, so just वही आप देखें, he was offered the role to become the global CIO of Goldman. But he said, I don't want to do that. I want to become an entrepreneur and I want to come back to India. क्योंकि यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी और लैंडस्केप दिखते हैं, दैट इज वेयर इट इज. और आई डोंट नो अगर आप लोगों ने शायद पिछले मैंने अपनी लिंक्डइन में आर्टिकल डाला है. लास्ट वीक वी आर द फर्स्ट Indian trust to launch an emerging market fund on London Stock Exchange, which Prashant went himself. और पिछले 2 साल में कोई IPO नहीं हुआ है वहाँ पे, ब्रिजेश, and we are the first IPO in 2 years, successful listing, an emerging market fund जो हमने launch किया for our UK based investors. So I think that is where it is. In the last 6 years, WhiteOak has grown to a $6 billion size, and Prashant has of course been leading this entire team. Fantastic. So you have partly answered my first question. I wanted to ask you, Prateek, about what's new at WhiteOak and what is the progress WhiteOak is making. So would you like to continue to elaborate on this? Sure. मैं अगर आपको बताऊं, again, मुझे याद है, I remember कुछ audiences यहाँ पे English और हिंदी कहते हैं, तो I'll do a English type of a discussion. तो और ये अच्छा टाइम होता है अप्रैल में, क्योंकि सबका परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है. तो यू लुक बैक एंड सी व्हाट यू हैव डन वेल एंड व्हाट इज योर हिट्स एंड मिसेस जो कहते हैं, राइट. एंड फॉर अस, आई थिंक द बिगेस्ट थिंग इज, हमें थोड़ा लेट हो गया था फर्स्ट फंड लॉन्च करने में बिकॉज ऑफ सेबी डायरेक्टिव दैट टाइम. बट जुलाई में वी लॉन्च्ड आवर फ्लेक्सी कैप फंड, और उसके बाद वी लॉन्च्ड 4 अदर फंड्स. सो वी हैव 5 म्यूचुअल फंड्स ऑन द प्लेटफॉर्म. PMS and AIF तो हमारे पुराने चल ही रहे थे. एंड वी सेट अप 50 ब्रांचेस इन द लास्ट ईयर across the country. 150 लोगों की टीम हायर की है on the sales and distribution side. अब 350 लोग हैं WhiteOak में overall, and not just India but globally now we have set up our presence which is there. So thanks to supporters like you, all our MFD partners who are here on the call. It's been an amazing journey for a young AMC जिन्होंने वही मिशन किया था कि we want to be putting the investor first, and deliver performance, deliver returns over a certain cycle. It's a tough market cycle, and जो जैसे मैं समझा रहा था कि it's not an easy time to be focused and principled, but that phase is more or less now. In my assessment, we will see the next phase where 23-24 can be a very good time to start generating some of those outperformance. Very nice. I must tell you, Prateek, out of so many AMCs, new AMCs who keep coming into the marketplace, the entire country, entire MFD fraternity is looking at WhiteOak very differently, because somehow there is a feeling that this company is going to make headlines, and the team is so brilliant, and 50 offices, one year, 150 people in sales is just outstanding. Congratulations. Thank you. Thanks, Brijesh.
So, Prateek, first things first, what do you think about equities? Last month has been very, very good. What is your call, fund house call on equity for the current financial year? So जैसे मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि नॉर्मली हम टॉप डाउन कॉल देते नहीं है मार्केट में, बिकॉज इट इज फ्रॉट विद अ लॉट ऑफ, आई मीन इट इज लाइक टॉस, जैसे आप कॉइन टॉस, आप विराट कोहली और धोनी की बात कर रहे थे, इट्स अ सिमिलर कॉन्सेप्ट, राइट? कि जरूर टीवी में चैनल्स में जाके बोलना बड़ा अच्छा लगता है, आई एम डूइंग वन दिस थिंग ऑन मंडे, बट द रियलिटी इज इट्स ऑलवेज इम्पॉसिबल, नॉट डिफिकल्ट टू टाइम व्हाट द मार्केट इज गोइंग टू डू. बट एक चीज मैं आपको जरूर बता सकता हूँ कि मार्केट एंड इकोनॉमी हैज अ सर्टेन कोरिलेशन ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. इस समय अगर आप देखें ना, द इकोनॉमिक साइकिल इन इंडिया इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग. 3 डेटा पॉइंट्स जो रिलीज हुए हैं इस हफ्ते, आप देखिए, जीएसटी कलेक्शंस हुआ, right? All time high. I mean, GST is a function of consumption, right? Because tax, it's not a asset tax, it's a consumption tax. So उस हिसाब से it tells you कि what is the consumption which is happening in the country. दूसरा था services का जो PMI data आया था, right? Which is again at all time high levels. And then manufacturing PMI data आया था. तो ये जो सारे जो data points है ना, and that is really what is building a lot of confidence. In fact, there was one of those World Bank studies which talked about probability of recession of countries in this year. India is the only country which has a 0% probability. तो वो जो phase है ना इस समय, where I think the economic cycle is very strong, and when we're looking at earnings of our portfolio right now and earnings of Nifty, again, those numbers are making us very confident ki, forget the Nifty numbers, right? Because Nifty numbers can go up and down. But the reality is that Nifty numbers finally are a function of जो price to earning ratio में earning बड़ा important है. आपका denominator बहुत important होता है. Because अगर denominator starts going up, तो numerator will follow. पिछले 10 सालों में क्या हो रहा था, अगर आप 2010 से 2020 का decade देखें, तो डिनोमिनेटर वाज नॉट रियली डूइंग एनीथिंग, बट न्यूमरेटर वाज मूविंग अप, और उस चक्कर में मार्केट्स हैड बिकम एक्सपेंसिव. बट यहाँ पे उल्टा हुआ है कि द न्यूमरेटर इज नाउ बिकम स्टैग्नेंट, right? But the denominator has actually started moving up. So at some period, you will see this numerator moving up, and you will start seeing markets following. Now, whether that will happen in 3 months, 6 months, 1 year, 2 year, that is a very difficult, because उसमें अलग factors और आ जाते हैं. उसमें जैसे liquidity factors become important, right? किस type की liquidity market में आ रही है? Because liquidity is governed by what is happening with US Fed rates. How attractive is India या emerging market versus Fed rate. अगर $5.5% पे रिस्क फ्री रिटर्न मिल रहा है यूएस इन्वेस्टर को, their ability to invest in any risk asset becomes very little. Yes. Having said that, अगर आपने फिर भी देखा पिछले 1-2 महीने में वापस एफपीआई बाइंग हुई है, right? You're also seeing some level of domestic liquidity support which is there इस समय. So overall, I think directionally कितना मूव होगा वो बहुत मुश्किल है बताना, but is the trend on the upside, वो जरूर दिख रहा है इस समय. A friend recently told me that sometimes there are positive surprises on the upside in life as well as in the market. So जब आप कुछ भी उम्मीद नहीं करते, for example, April महीना में nobody was expecting markets to go up by 4-5% on an index level. It's a very positive surprise upside. So you can keep getting these surprises. So Prateek, anything on the debt side? What's your call? Interest rates are subsiding. It is looking very attractive. It's looking very interesting. My team will thrash me for this, but because I don't have any debt funds right now. So Brijesh, to say that debt is looking attractive, I'm actually telling you something. I don't have products on debt, but just from a cycle perspective, again, nobody expected 7.5 to 7% on GSEC in such a short time, right? In fact, लोगों को लगा था 7% by end of year होगा, and in a way, some of these measures which have happened, जहाँ आपको काफी strength दिखी है, on the I mean, where overall, it's not that India में inflation is such a big issue right now, right? So जो भी data point आया है, that is clearly pointing to the fact that inflation is more or less moderated, or at least under control, and that is what. And at the same time, when earnings become stronger, you start reaching the peak of the interest rate cycle, right? India में अभी भी, although the last policy which had come in did talk about that they have the option of raising rate if inflation becomes an issue, but वो दिखाई नहीं दे रहा इस समय, Brijesh. So in a way, it's, as I said, it's always impossible to time the peak of it, but in my assessment, we are at the peak of it, right? जो
even you may move back to a 7.5 level, but उससे ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा. So automatically at this point of time, if थोड़ा सा अगर longer term exposure होगा duration में with a slightly 6 months to a year view, the risk return on debt is quite attractive. The profile is very attractive. So one thing for the audience is that, nobody realized, and GSEC from 7.6 is now at 7%. So 0.6% has already down, and people did not take much exposure. So before people actually start taking advantage on the upside, probably half of the gain is already over. Because you're not expecting GSEC to be at 5.5 anytime soon, or maybe 6. Maybe 0.5% more correction in the next 6 months, 1 year is good enough. And that is only half of what you have already been achieved in the last 1.5 months. 740, 750 is already 7. So that's very nice. So Prateek, you're coming out with a multi-asset fund. But before we discuss about the fund, I want to have a couple of questions, and I want to scratch your head in the interest of the audience to find an answer. Life insurance में कहते हैं कि यूलिप मत खरीदो, bundled product मत खरीदो, go for term insurance separately and investment separately. So I'm trying to play a devil's role here to ask you, why should one invest in a multi-asset fund? Why not separately in gold or debt and equity? No, so देखिए, Brijesh, as you know, my experience is more as a advisor distributor rather than a manufacturer, right? मैंने 10-12 साल केवल asset allocation models ही create किए हैं, जब मैं RBS में था और उससे पहले Sanctum में था, right? And in fact, हम लोग जब वो create करते थे, we used to look at historical performance of asset classes और फिर regression analysis करके decide करते थे risk adjusted return पे क्या ratios होना चाहिए हर asset class का, right? And we used to do that. एक मैंने जो चीज उसमें वो नहीं की थी, I'd never taken much attention, was the investor behavior, right? And the investor behavior to volatility is very different at different points of time. और आज के तारीख में भी आप देख लीजिए, and I'm sure हमारे ऑडियंस में भी लोगों को पता होगा कि काफी जब आप पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं अपना, राइट, इन्वेस्टर्स के साथ, तो कहेंगे अरे यार ये फंड तो ठीक है, बट ये फंड ठीक नहीं है, ये फंड भी ठीक नहीं है. तो अब उन्होंने आपने अपने एसेट एलोकेशन में अलग अलग कैटेगरीज ऑफ फंड्स डाले हैं, right, to create a wholesome experience for an investor. But there are investors who start looking at it from a product perspective rather than a portfolio perspective, right? कि आपका portfolio ठीक कर रहा है, but ये product ठीक नहीं कर रहा है करके. ये जरूर होता है कि कुछ, so typically British life में ना everything is not black and white, right? There are areas of gray which is there, and at times you have to deal with that gray when understanding investor behavior. So एक point तो ये है. दूसरा ये है कि especially when you look at tax adjusted returns today, right, every asset class has a very different treatment. Sometimes क्या होता है, when you bundle up these asset classes, the treatment becomes a lot more favorable for an investor from a tax adjusted return rather than pre-tax return, right? And in those type of circumstances also, having a asset allocation model actually helps to do that type of a thing. वो एक ऐड आपका आता है ना, हीरो होंडा वाला, fill it, shut it, forget it. कभी कभी solution products over the world are becoming the answer for handling investor volatility and also financial prudence for some of these categories of investors. So yes, for very large investors, and family offices जिनके पास वो capability of being able to do that deep level of analysis, they have the ability to, आज के तारीख में gold ETF की जगह आप gold contracts could be a lot more efficient, more more cost efficient. So अगर आपके पास वैसी टाइप की capabilities है तो जरूर आप look at it from an asset perspective. So I don't think it is the question of this कि ऐसा करना चाहिए या वैसा करना चाहिए. Sometimes there is a role for both of them in portfolios of clients. Very nice. So my next question, and as I said, I will try to, so अच्छा तो सब है, ये लगाना ही चाहिए. क्यों नहीं लगाना चाहिए के ऊपर में हम क्वेश्चन करना चाहते हैं आपसे, so that investors and mutual fund distributor get their answers and then they decide what they want to do. जब आप एक मल्टी एसेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो we have seen as a cycle, either equity is not doing well or debt is not doing well or gold is not doing well. It is very rare that all three asset classes performing in a particular year. In that situation, कभी अच्छा रिटर्न तो आता ही नहीं है. लॉन्ग टर्म में आता है,
लेकिन ईयर ऑन ईयर में अगर आप देखेंगे तो हर समय चैलेंज रहता है। इक्विटी ने अगर रिटर्न दे दिया तो डेट ने नहीं दिया, तो क्लाइंट को समझाते समझाते परेशान होते हैं कि इस साल ये गिर गया, इस साल ये गिर गया। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दिस? एक एक ग्राफ दिखा, एक वो दिखाऊं आपको, एक वेरी स्लाइड। इंटरेस्टिंग, पीपल लव व्हाइट ओक्स ग्राफ, सो प्लीज मैं प्लीज। एक एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ इसमें, ये आपने बहुत सही बताया, एंड एक मिनट, हाँ, मैं आपको, तो देखिए, अगर आई थिंक एक्सपेक्टेशंस इज इंपॉर्टेंट टू सेट आउट हियर, इनफैक्ट आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस, ब्रिजेश जी, टू समबडी एल्स। लोग कहते हैं ना, आपका बेस्ट परफॉर्मिंग मैथ है क्या, होगा क्या? तो मैंने कहा मेरा बेस्ट परफॉर्मिंग मैथ नहीं होगा, राइट? एंड देयर इज अ रीजन फॉर दिस। व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव ऑफ अ मल्टी एसेट फंड, वो अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। माई रीजन फॉर मल्टी एसेट फंड इज नॉट टू डिलीवर द हाइएस्ट रिटर्न. My objective is to deliver optimum returns with the lowest level of risk. तो जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है ना, दैट इज माई टारगेट. तो अब ये देख लीजिए, जो आपने कहा ना कि किसी साल इक्विटी अच्छा करता है, किसी साल गोल्ड अच्छा करता है, किसी साल यूएस इक्विटी अच्छा कर रहा है, किसी साल बॉन्ड अच्छा कर रहा है. तो जैसे हम 2020 का एग्जांपल देख लीजिए, राइट? ये तो हमको सबके, दिस इज फाइनेंशियल ईयर, तो ये अप्रैल टू मार्च है. तो अगर फाइनेंशियल ईयर 2020 में देखिए, सेंसेक्स बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड लास्ट वीक ऑफ मार्च में was down 23%, right, for the financial year. But gold was up about 30%. At the same time, US markets were flat and bond index जो था उसने करीब almost double digit 10% की return दी थी, right, because the interest rate started coming off उस समय. तो अगर हमने एक सैंपल मल्टी एसेट है, इसमें मैंने कोई मतलब अपना टिकड़म नहीं लगाया है यहाँ पे, राइट? आई एम पुटिंग अ सैंपल मल्टी एसेट पोर्टफोलियो जिसमें 4 एसेट क्लासेस हैं. 25% आई पुट इनटू डोमेस्टिक इक्विटी, 25% इंटू गोल्ड, मतलब सेम प्रपोर्शन है, जितना इक्विटी उतना गोल्ड है. 5% मैंने यूएस इक्विटीज में रखा है और 45% क्रिसिल शॉर्ट टर्म बॉन्ड इंडेक्स में. सो इवन इन अ ईयर लाइक 2020, इफ आई वाज इन दिस प्रपोर्शन, माय रिटर्न्स वुड हैव बीन 6.2%, राइट? सेम चीज अगर मैं FY23 में देखूं, विच इज ये जो अभी साल गया है, इस साल बेसिकली गोल्ड इज द वन विच इज डन वेरी वेल, बट यूएस इक्विटी एंड इंडियन इक्विटी इज कंप्लीटली फ्लैट, राइट? 2% एंड -1.5% रिटर्न. 16% गोल्ड ने रिटर्न दिया है. नेट नेट आपका इन्वेस्टर का फिर भी 6.5% के आसपास रिटर्न बना है. फाइनेंशियल ईयर 2012 देख लीजिए, सेंसेक्स ने नेगेटिव रिटर्न दिया -9.2%, गोल्ड 32.9% रिटर्न हो गया. सो द होल आइडिया ऑफ अ मल्टी एसेट पोर्टफोलियो ना, ब्रजेश जी, is never to try and outperform Sensex. It is basically a product जहां can I try to deliver 8% return for an investor with a very low standard deviation, right? कि 8% से ज्यादा, तो 8% कैसे आ रहा है? मेरा बैंक रेट अगर 6% है, 6% के ऊपर 2% के आसपास का मैं रिटर्न डिलीवर कर सकता हूं कंसिस्टेंटली फॉर इन्वेस्टर. एंड ये जो रिटर्न्स जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये एनुअल, ये एक साल के रिटर्न्स हैं यहाँ पर, राइट? सो एक साल में तो फिर भी थोड़ी सी वोलेट, बट एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें आप ये देखिए कि किसी साल में नेगेटिव नहीं है यहाँ, Yes, I was watching that, yeah. राइट? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो माई परफॉर्मेंस इन अ कैटेगरी लाइक BAF या MAF, it's not about ki can I be the best performing BAF या MAF in a 1 year period, but it is can I be the most consistent BAF या MAF over a 3 year period, right? That is the वो कहते हैं ना, जो एसिड टेस्ट जो होता है आपका, या दैट इज व्हाट द एसिड टेस्ट फॉर इट शुड बी. इट इज नॉट कि आई शुड नेवर बी सेड कि नहीं, बट उसने तो 20% रिटर्न दिया, उसने तो मगर 15% रिटर्न दिया, ठीक है. देयर आर टाइम्स इवन दिस मॉडल कैन गिव यू 25% रिटर्न इन 2021, बट उसका ये मतलब नहीं कि दैट इज व्हाट माय टारगेट इज. सो आई थिंक दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रिजेश जी, व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट लुकिंग एट व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव आपका, राइट? ऑब्जेक्टिव हैज टू बी वेरी क्लियरली डिफाइंड. I think this one slide, Prateek, which you have shown on the screen right now, is worth half an hour of our time to do this talk with you. It is so nicely placed, and as I said in the last, in a couple of times, I have spoken to you in your presentations, and the feedback of people is that WhiteOak's data presentation is fantastic. What do you think, guys? Please let me know in the chat box. The noticeable thing here is that there's no negative sample in any of these years, and that is why probably it makes a lot of sense to go for multi-asset. So I had a few learnings looking at this chart.
So now again, I will come back to one of the questions that I had with you. तो फिर इतना अट्रैक्टिव जब ये लगता है और तीनों एसेट क्लास एक ही जगह मिलते हैं, तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को या फिर इन्वेस्टर को प्योर इक्विटी और प्योर डेट में क्यों जाना है, जबकि टैक्स का जबरदस्त आर्बिट्राज है कि द गोल्ड आल्सो गेट्स यू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स and the debt also gets you capital gains tax. The returns are also decent. So why should people invest in a pure equity fund or a pure debt fund then? देखिए इसमें क्या होता है ना ब्रजेश कि there are different objectives of different investors which are there. एक होता है creating wealth, दूसरा होता है growing, I mean, distributing wealth, right? तो I have said this before also, I think in one of our meetings. My own belief is that creating wealth phase जो SIPs की होती है और the true compounding की होती है ना, there is nothing better than equity to do that, right? अगर किसी को 10 साल का पैसा कोई कह रहा है कि मुझे 10 साल की SIP करनी है, please, this is not a product to do SIP in, right? And I mean, again, it is वो कहते हैं ना कभी कभी आप अपने खुद ही पैर पे कुल्हाड़ी मारो, but I don't want SIPs in a structure like this. ये जो product है ना, this is really suited where people want consistency of return. आपके जो distribution objectives are nearby, right? आपको 3 साल में 5 साल में पैसे चाहिए for certain distribution objectives, right? तो an SWP in a structure like this, या अगर आप lump sum डालना चाहते हैं and you're very unsure of the volatility, timing market and all that stuff, because अभी भी over a longer period of time जो 12% at the benchmark level and 15% for active managers is still in my mind a very reasonable ask from equity as an asset class. A multi-asset fund is not targeting 12 to 15% return. A multi-asset fund should target 8%, it may deliver 11%, वो अलग बात है, बट जो टारगेट होता है ना वो मल्टी एसेट फंड का 8-9% रिटर्न के आसपास होना चाहिए. एंड as I said, more importantly, what is the consistency which is there? So this is more like a debt alternative rather than an equity alternative, right? And people, and आज के तारीख में especially with the new tax regime, right? अगर मैं आपको मतलब although मैं हमेशा कहता हूँ कि टैक्स को लेके कभी इन्वेस्टमेंट्स मत प्लान करिए, क्योंकि टैक्स का कोई भरोसा नहीं कब चेंज हो जाए नोटिफिकेशन. तो इफ यू हैड टू लुक एट एक ये जो अभी हुआ है रिसेंट नोटिफिकेशन हुआ है टैक्स को लेके, राइट? एंड इसमें सॉरी So just to interrupt, what is the taxation in the multi asset? हाँ, तो मैं आपको I'll just come. So if you see ये this is the thing जो आपके अब डेट, if you remember last week of March में जो नोटिफिकेशन आया था, that ensured that gold, anything which has less than 35% in domestic equity, right, will be taxed at marginal tax rate, right? अगर आपका 35% से ज्यादा है but 65% से कम है in domestic equity, it will still classify under the old structure of debt taxation, जिसमें 3 साल के बाद आपको long term capital gain मिलता है and you can take indexation benefits to calculate the taxable this thing. तो अगर जैसे आपका अगर 10% के हिसाब से रिटर्न बनाया पोस्ट इंडेक्सेशन, आपका नेट टैक्स एक्चुअली इंसिडेंस करीब 2-3% ही पड़ता है उस पे, राइट? सो दैट इज, सो मल्टी एसेट फंड एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम जो WhiteOak जो लॉन्च कर रहा है इस समय, we are not doing it under equity taxation, but this will be under the old debt taxation या आज के तारीख का जो hybrid taxation है of more than 35% domestic equity. So you will use arbitrage to increase the exposure to 35%? Yes. So वो actually there are a few other things which I can present on that, but mota that is what it is, that my equity exposure at any point of time will be between 15 to 45%. So अगर मेरा net equity exposure is less than 35%, then I will use arbitrage to actually make up that gap to come at 35% equity exposure. So Prateek, of course, out of the way question, between a balanced advantage kind of structure and a multi-asset kind of structure, what's your first choice and where should we go first? So मेरे को ना थोड़ा सा आपको फिर I'll have to tell you the role of gold in portfolios of client to give you that answer, because it's not as simple as that. So if you give me, मुझे आप 2-3 मिनट दीजिए तो I'll just explain to you the role of gold. I would right? love to see your presentation. Yes. Yeah, which is very less understood by people. Gold na is one of those complete anti-equities which is there, and where I come from is here, right? See, this is a typical BAF. If you look at, आप मेरे ख्याल से हमारे पार्टनर्स ने एक थियोरी सुनी होगी, एफिशिएंट मार्केट थियोरी करके,
basically efficient market theory actually talks about combination of asset classes and the role they play in delivering returns. अगर आप टिपिकल देखें पोर्टफोलियो, ये और ये मैंने क्या पिछले 12-13 साल की बैक टेस्टेड रिजल्ट यहाँ पे दिखाया है. इफ यू हैव a 100% debt portfolio and the debt is basically your 10-year GSEC out here, right? 100% debt portfolio over the last 13 years on a 1-year basis has given about 7.6% return with 7% volatility, right? Now if I increase equity, अगर 10% जो अगर if I add 10% equity and this is nothing but Sensex, right? अगर मैं 10% Sensex ऐड कर दूं अपने पोर्टफोलियो पे अगले पिछले 10 साल का, right? My actually return goes up, but surprise, my volatility comes down, right? तो ये जो है ना, ये efficient market theory. हाँ, तो ये जो theory है, आप actually equity add करने से आप volatility equity की standalone जरूर ज्यादा होती है, but in combination with debt, actually it comes down, right? And the most efficient part is here, where if you actually have a debt plus equity type of a portfolio of 75-25, your return profile actually goes up significantly. करीब 2.5% आपका return बढ़ गया है, but your wall is exactly at the same level which it was for a 100% debt portfolio. Now आप मेरे को जो BAF बोल रहे हैं ना, BAF typically resides in these structures between 60-40 debt equity to typically 30-70 debt equity. तो अगर आप इसमें देख रहे हैं ना, if you see your returns actually go up quite significantly, Brijesh ji, but your walls also start going up quite a bit. मतलब there will be periods in a 1-year period, 2-year period, even 3-year period where you could actually have slight negative this thing, but then average returns on a 1-year basis फिर भी आपका actually go up in a BAF. Now what happens in a MAF, right? अगर मैं इसी पोर्टफोलियो में अगर by chance gold ऐड कर दूं, जो मेरी ग्रीन लाइन है वो गोल्ड ऐड करने से हो रही है. And a very surprising thing, अगर आप देखिए, as I add gold into this portfolio, right, 20% gold into my portfolio, and look at this same 7% volatility, my return is again gone up by 1.5% almost from a debt equity. So my entire line, this green line आप जो देख रहे हैं ना यहाँ पे, this entire green line moves up by adding gold into the portfolio. प्रतीक, कभी-कभी ऐसा लगता है कि आप जो प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं वो मेड अप है, सही नहीं लगता, विश्वास नहीं होता. The data is so compelling. Data points बेच सकता हूँ. I mean, this is unbelievable. I mean, sometimes, even after spending so many years, you get these data points that your wall is still the same. Adding equity, the wall is same and your return goes up to 10%. And adding gold, which nobody considers a very good asset class for long term to increase wealth. Here you are again showing that if you add gold, your volatility still remains the same, whereas you get 4% alpha on the portfolio. But बताओ ये क्यों हो रहा है? I'll tell you, Brijesh ji, ये क्यों हो रहा है? I'll tell you why this is happening, right? And the reason is this particular slide. This, in my mind, अगर आप लोगों को वो करना है ना, this is one of the most important slides of financial assets. There is correlation जो होता है asset classes का, और हमने इसमें क्या किया है? Again, we have taken a पिछले 12 साल का data और या 13 साल का data, and we have tried understanding what is the correlation of different asset classes. And this is an amazing this thing. अगर आप देखेंगे correlation of +1 क्या होता है? मतलब something is exactly correlated. अगर कुछ 100 रुपए ऊपर जाएगा तो वो भी 100 रुपए. जो कभी कहते हैं ना IT इंडेक्स के बीच में और फाइनेंशियल सेक्टर इंडेक्स के बीच में बहुत हाई कोरिलेशन है. मतलब IT इंडेक्स अच्छा करता है और फाइनेंशियल सेक्टर. Now some of it could be accidental, but when you look at 13-year data, then the fact is that the correlation actually is over a longer period of time. 1 साल का correlation की बात नहीं कर रहे हैं, ये 13 साल का correlation है. तो इंडियन इक्विटी और गोल्ड इज परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड. मतलब अगर गोल्ड इंडियन इक्विटी अच्छा करता है तो गोल्ड एक्चुअली खराब करेगा, और गोल्ड अच्छा करता है तो इंडियन. नाउ ये मैं 1 दिन और 2 दिन की बात नहीं कर रहा हूं, दिस इज ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. आई एम सेइंग दैट अगर इंडियन इक्विटी 100 रुपए ऊपर जा रहा है तो गोल्ड नीचे 50 रुपए हो रहा है, गोल्ड 100 रुपए हो रहा है तो इंडियन इक्विटी -50 हो रहा है. दैट इज द टाइप ऑफ कोरिलेशन. A lot of time people think that Indian equity and US equity is very strong correlation, but actually nahi hai. It's only 0.39 times, right? The correlation index between Indian equity and US equity, same between Indian equity and debt, is actually minus correlation of 0.22. So now what happens ना, ये मुझे अपने ना ब्रिजेश जी अपनी केमिकल इंजीनियरिंग के दिन याद आते हैं, right? I did my chemical engineering, और हम लोग जब लेबोरेटरी में जाते थे ना, so we used to put various elements together to create certain molecules and all that, right? The classic one used to be hydrogen और oxygen को डालो ना
तो H2 और O2 में H2O भी बनता है और H2O2 भी बनता है. H2O2 is a hydrogen peroxide और H2O is water, right? तो दोनों देखने के लिए तो atoms वही है, but the molecule is very different when you put these things together, right? Similarly, out here also, when you put certain correlation में differently correlated asset classes together to create a portfolio, अपने ट्रेडिशनल मैथ्स का क्या प्रॉब्लम है ना ब्रजेश, कि उन्होंने गोल्ड की एलोकेशन 10% पे लिमिट की हुई है, राइट? द मोमेंट यू allocate only up to 10% in gold, you're not allowing this correlation to play. क्योंकि आप कहते हैं कि एक तरफ मैं इक्विटी तो मैं लेके चले जाऊंगा 60-65% तक, बट गोल्ड को मैं केवल 10% पे ही लिमिट करूंगा. सो देन एट द मोस्ट व्हेन मार्केट स्टार्ट डूइंग poorly, right? There was a question which you had said, why maps have not done well. When markets don't do well now, equity falls off, and the whole NAV of that product is so much dependent on how equity does rather than how different correlation. Now, if I can give the same importance of equity to gold, this equation changes quite dramatically. Now, will this continue for the rest of 50 years? I don't know, right? And that is where some of these models have to keep evolving over a period of time. Today I can say that on basis of पिछले 15 साल की हिस्ट्री के बेसिस पे this model definitely works. Now, कल theoretically अगर Bitcoin आके gold को replace करता है, then you may have to add Bitcoin into this equation, right? Or you may have to add some other things, and that is, so nothing in, like as you were saying, right, when you were talking about entrepreneurs, nothing in life is static, right? You will have to keep evolving. But on the basis of last 15 years, I can say these type of models actually work well, where equity and gold in combination can actually negate out each other and can create a lot of stability in the final outcome which is there. और इसमें जो second most important चीज जो मैं आपको एक दिखा रहा हूं ना, एक slide, this is what you have to finally tell your investors. मेरा अगर 3 साल की रिटर्न देखूं मैं on the basis of model which I have created, right, at 96% of the time on 3-year rolling return मैं 8% से ज्यादा रिटर्न दूंगा, right? मेरी lowest return 6.8%, highest return 17% है, but I don't want to talk about highest return. My more important thing is this: 96% of the time I want to deliver 8%. यही चीज आप सेंसेक्स का डेटा देखिए, सेंसेक्स has only delivered 78% time on 3-year basis more than 8% return, right? और ये 2500 observation points हैं ब्रिजेश जी, these are not less number of points, right? Over 13 years, when you start looking at this, most, again, beautifully, there is not a single instance of negative return. Forget negative, lowest return has been 6.8%. right, in a structure like this. So that is really what you're trying to achieve for investors जो मल्टी एसेट एलोकेशन के लिए करते हैं. उनको रिटर्न्स की बात नहीं करनी चाहिए, कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न की बात करनी चाहिए. इसका मतलब है, टू समराइज दिस, द आइडिया अबाउट बैलेंस एडवांटेज फंड इज दैट कि स्लो एंड कंसिस्टेंट रिटर्न मिलेगा. उसी तरह से मल्टी एसेट प्लान में आपने पैसा डालिया, फिल इट, शेड इट, फॉरगेट इट हो गया. सो दीज टू एसेट क्लास बैफ एज वेल एज मैप आर काइंड ऑफ फिल इट, शेड इट, फॉरगेट इट, डाल दिया, भूल जाओ, और आपका लॉन्ग टर्म में पैसा बन रहा है विद लो वॉलेटिलिटी. द पॉइंट हियर इज लो वॉलेटिलिटी, हायर रिटर्न देन डेट विद लोअर रिस्क. और बैफ इज अ वेरी गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मी, राइट? आज के जो टैक्स रेजिम में ना, अगर आपको जो इक्विटी टैक्सेशन पे उस लेवल ऑफ वॉलेटिलिटी पे डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे आप टारगेट कर रहे हो कि आप 8% या 9% हर साल निकालना चाहते हैं, राइट, अपने कॉर्पस से, एंड इंश्योर कि कॉर्पस फिर भी डिलीट ना हो, उस टाइप का जो SWP प्रोडक्ट के लिए बैफ इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट. एंड इसीलिए अगर जो 2.5 लाख करोड़ की जो बैफ मार्केट है, ये आपको 10 लाख करोड़ पे मिलेगी अगले 5 साल में. करेक्ट. Any final words on your NFO you want to talk about? नहीं, so as I said, I think कुछ होते हैं products जहाँ which are basically the competence of the investment team, right, and looking at what type of alpha can be created. And we have a 40-member team which actually works with us to do that. जो हमारा flexi cap fund है या mid cap fund है, they are all targeting that type of an audience. कुछ होते हैं जो distribution products होते हैं, right, which is actually meant to increase the market size of the addressable. अगर आज के तारीख में हम कहते हैं कि म्यूचुअल फंड की पेनिट्रेशन केवल 6% 7% है, उसको हम 10 15 20% कैसे बना सकते हैं, by bringing in new investors into that segment, right? जो volatility से वो होते हैं, उनको predictability चाहिए थोड़ी returns की. So this type of a structure is really addressing those type of investors, which will help increasing the overall size of the addressable mutual fund market. Right. So that was
fantastic presentation, Prateek. Again, I will say we'll take a few questions to wrap it up. And if you can also see a couple of questions in the chat. The one question was there. And I always try to pick up questions which are tough question, difficult question, devil's roles, because somebody's saying we already have exposure to other multi-asset funds. Why should we look at WhiteOak? See, I always say that आपको product के उस पे देखना चाहिए. The typical multi-asset fund today, and I don't want, see, everyone has done something on the basis of their own understanding. But present day पे जो सारे multi-asset funds है ना, वो BAF plus gold है. Basically, they are running it more like a BAF structure with a 10% gold exposure. I think the differentiation which we are putting into place is that this is a true multi-asset fund. मतलब जो मैंने 10 से 40% का जो gold का exposure बोला हुआ है, I think that is what differentiates this product. Gold is anti-equity. It reduces volatility in the portfolio. तो आपको यही देखना है कि अगर आपके वैसा investor profile है जो 8%, क्योंकि don't look at which is the best performing MAF, because that should not be the objective for MAF. मेरे हिसाब से वो equity funds के लिए बहुत बढ़िया objective है. But for a multi-asset fund, you have to see which is the most consistent MAF. बल्कि यही पैरामीटर मेरे ख्याल से BAF के लिए भी होना चाहिए आज की तारीख में, कि which is the most consistent BAF और MAF. क्योंकि जैसे ब्रिजेश जी आपने बोला था, राइट, why should you put money into equity funds अगर BAF MAF हैं? Equity funds are for compounding. These are more for preservation and ensuring steady distribution. So in your multi-asset fund, you are considering exposure of more than or almost equal to 25% in gold? आज के तारीख में अगर आप देखें, जैसे मेरे MAF का, if today what my position is, मेरा करीब 25% डोमेस्टिक इक्विटी पे है, करीब 22% के आसपास गोल्ड पे है, 7% यूएस इक्विटी है और बाकी सब डेट में है. सो माय गोल्ड इज ऑलमोस्ट एज एग्रेसिव एज डोमेस्टिक इक्विटी. इट्स एज ऑफ टुडे. जरूर हो सकता है कि अगर गोल्ड की प्राइसेस और बढ़ते रहें तो एक्चुअली द एक्सपोजर टू गोल्ड विल कम डाउन. Okay, so that makes a big difference. Are other funds houses have an equity structure in MAF portfolio kind of, yes, or they also have? Yes. So अगर देखिए MAF की इंडस्ट्री, MAF का जो एग्जिस्टिंग AUM है वो करीब 25,000 करोड़ का है. तो उसमें से 24,000 करोड़ से ज्यादा सारा इक्विटी टैक्सेशन वाले स्ट्रक्चर्स हैं. Don't you think this will be a negative in terms of your strategy, in terms of investors and distributor to go for debt exposure? So again, the same thing is, देखिए इक्विटी मार्केट अगर बहुत अच्छा करेगा ना तो माय प्रोडक्ट विल अंडर परफॉर्म. देयर इज नो डाउट अबाउट इट, राइट? इट्स द सेम थिंग. BAF में भी किसी का ज्यादा इक्विटी एक्सपोजर है, सो ही विल डू वेल इन अ मार्केट वेयर इक्विटीज आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल. बट द आइडिया इज नॉट अबाउट डूइंग वेल फ्रॉम अ रिटर्न पर्सपेक्टिव. द आइडिया इज कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न, राइट? कल कोई इवेंट होता है तो उसमें विल यू बी एबल टू प्रिजर्व दैट रिटर्न is what the most important objective for a MAF is. So I am not here to deliver high returns. I am here to deliver consistency of returns. It's a very bold call, Prateek. I must admit that in an industry of 25,000 crores of MAF with equity taxation, WhiteOak has come out with a debt-oriented tax structure. Of course, the hybrid tax structure of 20% long term. And Brijesh ji, this is not my approval came in the month of Feb, by the way. तो ये मैंने टैक्स के चक्कर में मैंने ये प्रोडक्ट नहीं किया था. I actually, when I designed this product, I wanted it to be a true multi-asset fund product. I didn't want it to be a equity-oriented BAF structure with 10% gold exposure. This is quite appreciated and very bold. The strategy from WhiteOak perspective. There will be people who will take it up, and there will be people who will not take it up because of the taxation. So I must admit, the very bold structure. So the question, I mean, just one question which I just saw, Kalpesh ji का जो आया है, जो 8% बैंक में अगर FD है, so why should client? This is a very important question, because maybe 8% नहीं है, 7.5% है, so that is the irrelevant part. But the idea is bank FD rates हमेशा 8% नहीं रहेंगे, राइट? आज के तारीख में जरूर आपको एक साल की FD में शायद कोई दे दे 8% या 7.5% दे दे या 7% दे दे. बट when you look at products like this, you have to look at अगले 10 साल में मुझे अगर कंसिस्टेंटली 8% रिटर्न हर साल चाहिए तो मैं पैसे का, क्योंकि एक चीज हम लोग रियलाइज नहीं करते हैं ब्रजेश जी, वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क्स एज एन एडवाइजर टू एन इन्वेस्टर इज माय रीइन्वेस्टमेंट रिस्क. कल अगर मेरा पैसा मैच्योर होता है कहीं पे तो उसको मैं उस समय डालूंगा कहां पे, right? Where will I reinvest that money? That becomes a very, how do I consistently give him 8% return every year for the next 10 years, right? That is really where MAF comes in. It is not कि आज मैं 8% return दे रहा हूं, मैं अगले 10 साल हर साल 8% return देना चाहता हूं. Fantastic, and that is all we have. I would like to wrap it up by summarizing what Prateek has to offer today. He said equity market, of course, he can give a view, but views really don't matter in the short term. He is positive, but equity market has its own way to go up.
and down. Debt market as a fund house, WhiteOak is very positive that interest rates have peaked and probably it's a good time to invest in debt. An interesting part about the multi-asset category, he said, is that the exposure to gold, and he showed some brilliant charts that gold can really be a good allocation, and WhiteOak is coming out with one of the funds having a larger gold exposure of almost 25 to 40%, which can make a huge difference to the portfolio. It will have a debt hybrid structure of 20% long-term capital gain, but the volatility will be lower and returns can be more consistent. This is what I can get out of your talk, Prateek. Anything further you want to add? No, thanks. That is exactly what it is, Vijayji. By the way, the debt view was not WhiteOak fund house view, because we don't really give That's views on okay. more my personal thing. Our gold exposure is 10 to 40, not 25 to 40. 10 to 40. At this point of time, we are at about 20% exposure. And just one point which Supriya has asked here, who makes these presentations? We have a wonderful product team in-house. So as part of my team, we do a lot of, so one thing, when you are an investment promoter led asset management company, data is something जो हमारे लिए बहुत important होती है. It's not about, we go a lot on what is the type of data insights which are coming in. So Supriya, that is something which we use in creating many of these presentations. मैंने एक चीज जो सीखी है, करीब 30 साल हो गया मेरे को मार्केट में, कि मार्केट की भविष्यवाणी करनी हमेशा मुश्किल होती है. But the history of markets tells you what the future of the markets will be, because these trends do tend to repeat. That's why it's always important to understand what has been the history to try and get some idea about the future of markets. Fantastic. Thank you so much, Prateek. That was all, and good to have you on the show again. And we keep learning by your thoughtful presentations and views. Thank you so much for being here, and all the very best for your fund house and your NFOs and your products. Thank you very much, Bridget. All right.